And we have some news coming in at this point in time from Bengal. Bengal BJP stages a stir on the streets of Kolkata. BJP dharna over women workers at bars decision. A scuffle also is broken out between cops and BJP workers. Bengal gives nod to women workers in bars. BJP versus TMC face off over women working in bars. हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं रात को महिला बार में नाइट क्लब में जाएगा दारू पिलाने के लिए बार टेंडर का हिसाब से। इसी का हम लोग प्रतिवाद करते हैं। आज महिला बार टेंडर हो सकता है, महिला वॉर प्लेन चला रहे, महिला बॉर्डर में लड़ाई कर रहे पुरुष के साथ, सब हम लोग जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो बार टेंडर हो सकता है, उत्तर प्रदेश में जो बार टेंडर हो सकता है, पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई सुरक्षा है ही नहीं। यहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। एक भी जगह में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आप पुलिस में जाओ रिपोर्ट लिखाने, एफआईआर लिखाने, आपका एफआईआर नहीं लिखेगा। कोई स्पेशल टास्क फोर्स नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। I'm going to go straight across to Surya Agni for more details. Surya Agni, this has become an issue of employment to women, right to employment for women versus the right to safety. The BJP is saying the women aren't safe. They can do this job, but the government needs to ensure that their safety is ensured. But Sneha, we need to understand this in a perspective. What we're talking about here is that this week itself, the West Bengal Assembly passed an amendment wherein the Bengal Excise Act that was amended. That allows right now, the amendment now allows women to work on FL on shops or FL on properties. FL on is foreign liquor on service. That basically bars and restaurants also fall under that. So women can now sell liquor. Now since that the BJP has taken on the Trinamool Congress government. Now what the BJP has claimed, the BJP just ended a huge protest led by Agnimitra Paul, Rupa Ganguly, Shukanta Majumdar in front of the State Excise Department's office. What they claim is that they are not against women employment or generation of employment for women. What they claim is that safety and security should be provided to women who will be working late at night. Their safety should be given out, and they highlight the Arjikar case, and that is where their protest is all about. Now the government, the incumbent Trinamool Congress, is of the opinion that it will not only generate employment opportunities for women, but also it's going to end the 100-year-old law which was very discriminatory, and it will provide an equal opportunity for men and women to work in this field. Back to you. For the moment, Surya Agni Roy getting asked those details. In fact, we have a reaction from Shukanta Majumdar. Let's take a listen. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আপনি আমার থেকে ভালো জানেন। মানুষের হাতে কাজ নেই, কর্মসংস্থান নেই, পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে অন্য রাজ্যে যাচ্ছে। সেই পরিযায়ী শ্রমিকরা অন্য রাজ্যে গিয়ে যখন কাজ করছে, তারা যখন কাজ পাবে না, তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই পরিবারের লোকদের বাধ্য হবে তার পরিবারের মেয়েকে পারে গিয়ে কাজ করার জন্য। তার সত্যি হাতে কাজ নেই, মানুষ কোথায় যাবে, মানুষ কোন জায়গায় যাবে? আপনি বাধ্য করছেন আমার ঘরের মেয়েদেরকে, আমার ঘরের মহিলাদেরকে পারে পানশালাতে পাঠানোর জন্য।